Good evening, everyone. Am I audible? So there are some changes, the technical changes. So if any glitch comes to today, please cooperate because we are not that much technically sound. Sipu Jaishwal, is everything fair? Ticket confirm, please. Is everything fair? स्टीडी changes है ना शिपू जायसवाल. चल, shall I start now? Okay, so Jan, Shivu, everyone. Alia, good evening. Mukesh Kumar, good evening. Is your first lecture, Mukesh Kumar? Okay, dears. So yesterday we had done a very good job actually for the conicoids. Okay. When I was talking about the conicoids yesterday, I told you that the first part is demonstration. So I hope everyone have enjoyed that, right? Demonstration of ellipsoid, hyperboloid of one seat, hyperboloid of two seats, पैराबोलॉइड के अंदर में इलिप्टिक पैराबोलॉइड एंड हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. After that, I told you that there is nothing new in this segment, in this particular chapter, only that is a complete reflection of the terms or the technical things which we learned during the chapter sphere, cone, and cylinder. Fair, dear fellows? So, what I say in today's lecture, we are gonna summarize किसको, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को. एंड प्लीज डोंट पैनिक कि सर ऐसे आपने कैसे खत्म कर दिया करके. इफ यू विल से यस द थिंग्स आर डन, then only I will say, I will like feel that, otherwise I'll keep on. So today's lecture will be continuation of central conicoids which we were doing yesterday, and that was the conceptual clarity session. Okay, dear fellows. So I guess Abhi, you all have. Good evening, everyone. So you all have that much level of feeling कि when I talk about what is vertex of hyperboloid, you feel that, right or not? ठीक है? It is a central conicoid, सुजान. चलो. So कल हमने जो बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे normals की. So I will continue from there itself so that you can connect the things, because today the things will be started from there itself. So don't feel I'm repeating the things, okay? So yesterday I talked you normals from a point, let's say FGH, on some given central conicoid.
Let's say equation of the central conicoid we have, that is ax square plus by square plus cz square equals to 1. So why I am starting from here itself, the reason you will come to know. Give the word please everyone. So yesterday I told you, suppose that this is a point FGH and this is some central conicoid. Today we will like easy things, only summarizing the central conicoid. So this is the central conicoid. Let's say I draw a normal on this and we had taken this point as alpha, beta, gamma. और आज आपको today you will realize conceptual clarity का meaning as well. Yeah? चलिए. So when you talk about tangent plane, let's say this is a point P, this is a point Q. We know that tangent plane at the point alpha, beta, gamma to 1 is, what is the tangent plane? Shundram, A alpha x plus B beta y plus C gamma z equals to 1. Right? So if this is the tangent plane, if you want to equation of normal, so what will be the equation of normal? As I told you initially, DRS of a plane. So is tangent plane ka DRS are what? A alpha, B beta, C gamma. Right? So equation of normal will be looking like x minus f, alpha beta gamma se pass, x minus alpha upon A alpha, y minus beta upon B beta, z minus gamma upon C gamma. So let's say if you put this equation as some parameter r, all three components. So let's say give this 3, since 3 also passes through the Q, that is the point FGH. So we have f minus alpha upon A alpha equals y minus beta upon B beta, that is G, h minus gamma upon C gamma, that is R. So from here you can find, we can have alpha equals f upon 1 plus AR, yesterday I told you, G upon 1 plus BR, gamma equals 1 plus h upon 1 plus CR. Fair dear fellows. So अभी if you talk about कि सर ये तो आपने कल भी, yesterday you told, why you started from here? You may ask this question, right? So as it is a fresh lecture, I wanted to make you feel the connected, so I started. अभी देखिएगा ध्यान से. Suppose that I have this 3D some central conicoid. Okay, dear fellows. I have this point FGH here. Getting? So from FGH, I can draw 6 normals. Yesterday I told you or not? Because if you put using these alpha, beta, gamma in 1, we get an equation in the variable r of degree 6. So 6 concurrent normal. Concurrent means what? From the point Q itself. What does it mean? 6 concurrent normals. Concurrent means that is 6 normals from Q on 1 can be drawn. Right or not? R1 R2 का different values के लिए. So
अभी आप पूछेंगे सर इससे हम लोग क्या करने वाले क्या है, सो आई विल से जस्ट वेट नाउ। देखिए ध्यान से, suppose that this is the point, from here this is the normal, from here itself this is another normal, this is third, fourth, fifth, sixth. So abhi to we are on the 2D board, so what I can say is, suppose that this is the point and this is the surface, so from here let's say we have these 6 normals, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 3 3 6, this is the point Q. What it says is these normals will generate a surface and that surface will be a cone. Did you get my point? बात समझ में आ रही है या नहीं सबको? So today's article is starting from here itself. So let's start from there. What we have now? Okay. Who's messaging this? किसको दिक्कत है भाई? प्लीज, ये तो हमने लिख दिया था ना कल। अच्छा, जिसका फर्स्ट लेक्चर होगा वो फटाफट इसको लिखेगा जल्दी से, सो दैट वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। जल्दी कीजिए। Shall I move now? Please reply. Sure. So write down it is a like important point. The feet of these normals is on a cubic curve whose equations are given by, is it visible? Whose equations are given by x equals 1 upon f upon 1 plus ar, g upon 1 plus br, z equals h upon 1 plus cr. So I suggest you guys to remember this point, because whenever they ask you about the cubic curve, so what you will give the information about that cubic curve. For that cubic curve we have x by z is this. So feet of normals, ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है। मैंने पहले बोला आज थोड़ा सा ग्लिच रहेगा क्योंकि मेरे को खुद भी मतलब अभी उतना प्रैक्टिस नहीं रहेगी इस सिस्टम पे, फिर भी देखते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे ना। Is that noted? कनिष्क जोशी, ओके।
that noted? Shall I proceed now? Okay. Okay, chemistry. Fair. Chalo. The very wonderful article is waiting for us now. From here itself, we will start. चलिए देखना ध्यान से. What I said is, as we have observed from this point Q, 6 normals can be drawn over the central conicoid 1. So what I say, the next article you can write like the star or the dot. The 6 normals generate a cone. Please underline this and highlight this article because this will give you a better feeling for this central conicoid and normals. So मैंने पहले ही आपको बताया था कि don't feel this कि these are the lines. Feel this. This is 3D surface and 6 normals are there. So these normals will generate a cone. और कितना आसान है देखना जरा, आराम से देखिएगा. Be on the board, please, everyone. देखिए, since any line through FGH can be given by x minus f upon L equals y minus g upon m equals z minus h upon m. आराम से देखना प्यारे बच्चों, इसको होता क्या है, मैं I have taken a line, okay, and we are trying to generate a cone with the help of these variable lines. But these variable lines are not some ordinary lines, these are normals from some point on the central conicoid 1. So I am trying to find the equation of cone which these lines, these normals can generate. So we will satisfy on satisfying by, कहाँ गया, x equals f upon 1 plus ar, y equals g upon 1 plus br, z equals h upon 1 plus cr on satisfying above equation by. And why we have done this? Because we are not finding any ordinary cone, we are finding a special cone which is being generated by these 6 concurrent normals. And for those concurrent normals, we know the equations are given by, यहाँ पे मैंने लिखा भी था अभी, this was x, this was y, this was z. Right or not? So what happens, dear fellows? We have, satisfy करा दीजिए, f upon 1 plus, बस this वाला article is bit hectic थोड़ा सा, बाकी सब स्मूथ है एकदम, बस यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ध्यान रखेंगे, माइनस f upon l, यहाँ पे गए तो g upon 1 plus br minus g upon m, this goes to h upon 1 plus cr minus h upon n. Now
since LMN are arbitrary, so अभी तक तो we are master in this कि भाई आर्बिट्रेरी का बैंड कैसे बजाना है, राइट और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना. So to get locus we eliminate LMN. Okay dear fellows, to get locus we eliminate LMN by considering, बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, each factor equal to k and then applying for, अरे यार सॉरी, मुझे लग रहा है नीचे चला गया, आई एम सॉरी. यहां तक तो यू कैन ऑपरेट, इक्वल टू के तक आप लिख लीजिए, कल से मैं सारा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कहां तक जाना है. ईच फैक्टर इक्वल टू के एंड अप्लाइंग द फर्दर कंडीशन दैट आई विल टेल यू. प्लीज नोट डाउन. Is that noted? ये वाला नोट हो गया, आराम से लिख लीजिए. ओके, फेयर डियर फेलोज, देखिए ध्यान से. ईच फैक्टर इक्वल टू के, कंटिन्यू करेंगे, एंड देन एलिमिनेटिंग आर, then eliminating R we get, so I'm writing that directly, AF B minus C divided by L B G C minus A. वो मतलब याद करने में भी बहुत दर्द नहीं देता है. यार मेरे को बड़ा स्क्रीन अभी लगाना पड़ेगा. लैपटॉप थोड़ा सा कल पास रखेंगे. आई एम सॉरी इफ एनीबॉडी लाइक किसी का कोई डाउट छूट जाता है तो मेरे को चिल्लाएंगे नहीं. What somebody is saying? B C H, C की जगह A, B की जगह A upon N. Now we have the locus as, आराम से एकदम टेंशन नहीं लेंगे अभी कि सर ये आपने क्या कर दिया. आई एम सेइंग लेट्स से दिस यू गॉट एज R, so from he, sorry K लिया था ना इसको. Now you put this as equals to K, this as equal to K, this as equal to K. Now manage the terms and eliminate R. Okay? So eliminating R, on eliminating R, you will get the equation like this. Since we want locus, so locus will be, अब LMN को तो replace करना पड़ेगा. शिबू जायसवाल, बोलो हाँ या ना. So what you will do? If you take this as equals to R, so this will be x minus f upon R by minus g upon R.
बहुत आराम से बिना किसी तनाव के, प्लस ये इक्वल टू, आई एम सॉरी, अरे यार इट गोज टू 0, आई एम सॉरी, वो इक्वल वाला मतलब इनको टर्म्स को मैनेज करके, प्लीज एडिट दैट, प्लीज एडिट दैट. सो दिस वी आर गेटिंग इज अपॉन n की जगह z minus h upon r equals 0. This implies AF into B minus C upon x minus f, BZ into C minus A upon y minus G plus CH A minus B upon Z minus h equals to 0. So what happens, dear fellows, here is किसे पूछूंगा, जितेंद्र, Susan, is it the equation of Alia? It is the equation of, बोलो बोलो, किसका इक्वेशन है ये? What you have replied? Let me check. CBA. अच्छा नीतीश, पीटूंगा नीतीश मैं तुमको अभी, बहुत कस के पीटूंगा. अरे भाई डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है. ओफो, बाकी लोग बताइए. अभी देखिए, दीपक, वेयर आर यू मैन? आलिया, रिप्लाई कीजिए. सबकी पिटाई होगी अभी. भाई this is just a constant value. So when you solve this, here you will have yz type, here you will have xz type, here you will have xy type, and this goes to 0. So ये किसका इक्वेशन बोला था? अब मैं P2 मत लो, अल्फा f by z या कुछ भी यहां पर, let's say अल्फा 1 by z plus alpha 2 zx plus alpha 3 xy equals to 0. भूल गए आप लोग? कौन? लिख दीजिए सब लोग. कोन का लेक्चर 1, और नॉट ओनली कोन, दिस इज अ कोन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, मतलब वो सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे करके भी बोला था वहां पर. तो अभी अपने को यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म अल्फा 1 अल्फा 2 में कुछ और भी मिल सकता है. सो इस वजह से यहाँ पर लेट्स से वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या आएंगे वो तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा. बट फॉर द टाइमिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोन माय डियर फेलोज. नीतीश, रिवाइज करना है आपको, ठीक है नीतीश? बुरा नहीं मानेंगे, है ना? चले नोट कर लेंगे सारे लोग. तो नॉर्मल्स की कहानी में ये एक अच्छा मोड़ था. दिस वाज अ लाइक ब्यूटीफुल ट्विस्ट इन द स्टोरी ऑफ नॉर्मल्स. सो टुडेज लेक्चर आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम हियर. आई होप you have enjoyed this article, particularly when you talk about normals from a point on some conicoid in continuation of tangent plane at some point. If you have any doubt till here, you can ask. So the first segment of central conicoid is finished.
If you have any doubt here, please ask. Otherwise, I will move on the next segment of conchoid. Please write down as well. Is that noted? Have you done this? Okay, Shivu. What about others? Everyone, is that noted? Okay, dears. Chalo. So let's move to the next article. अभी आप लोग तैयार हो जाओ. देखते हैं कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं. एंड पर्सन्स हु फील ये कि वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो तो नहीं है. Proper lectures है, so I am like always in continuation of the things, checking the references which I have already taught. चलो. Okay. You on the board, everyone. अब देखेंगे यहां पर, समझेंगे स्टोरी को कि आगे की स्टोरी है क्या. ठीक है. सभी लोग ध्यान देंगे. Till now we have talked about, let's say this is a central conicoid, ax square plus by square plus cz square equals to 1. Here? चलिए. Till now we were discussing about, let's say this is the point alpha, beta, gamma. Over this, let's say I want to find the tangent plane. Okay, dear fellows, that we found as a alpha x plus b beta y plus c gamma z equals to 1. This was the story for the previous lecture. Now, if you correctly remember, देखिए ध्यान से, if you try to recall the chapter sphere, so persons who are new to this lecture only, they are suggested to follow the lecture for sphere as well, like introductory, DCs and DRS, then plane, then straight line, then sphere. Sphere में you will have 2 lectures, so the second lecture will be giving you the clear picture which I am going to discuss here. So in the same playlist you must go through that lecture if you didn't attend. चलिए ध्यान से देखिएगा. Suppose that I take this point alpha, beta, gamma. Now let's say this is the central conicoid. And it is ax square plus by square plus cz square equals to 1.
अभी व्हाट आई एम डूइंग इज, ध्यान से सुनना, आई एम लाइक ट्राइंग टू फाइंड द टेंजेंट्स फ्रॉम हियर ऑन दिस कॉनिकॉइड्स, राइट? कुछ लोगों को याद आ रहा होगा. सो व्हाट हैपेंस इज this locus or these points will be lying on a plane and that plane, शिबू जायसवाल क्या बोला जाएगा उसको? दीपक, पोलर, I'm sorry, plane of contact, I'm very sorry, plane of contact. Because here this point is called point of contact, right? Point at which you are trying to find the tangent planes, that point is called point of contact. Now if I take a point which is exterior to, means that point is not on the central conicoid, and I draw tangent lines from here, then all these point of contacts का जो सरफेस आपको मिलेगा, all these point of contacts will be lying on a plane and that plane का name is plane of contact. बोलो हाँ या ना everyone? How I told you कि if you want to get the locus, suppose that you want to get the equation of it, क्या करते हैं हम लोग? याद दिलाइए. What we do? We write equation of a line passing through this. So that is है. अभी क्या करेंगे? Satisfy the point, क्या मिल जाएगा? Point on line. अभी देखिएगा, we have done so like a beautiful things कि अभी ये अपने लिए ना जस्ट एक रिपीटिशन है. पॉइंट लीजिए, क्या मिलेगा? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर. ऑन सेटिस्फाइंग कॉनिकॉइड क्या मिल जाएगा अपने को मेरे प्यारे बच्चों? ए इंटू B into persons who are attending lectures from the initial, now they will have the joy actually, I'm pretty sure. और नहीं है, that means your revision is lagging. Quadratic equation in R, want two equal values of R, so discriminant must be 0, right or not? If not looking, अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं बोल रहा हूं, so discriminant must be 0. Fair? I guess it's clear. So discriminant means to quadratic equation आपको मिला है कैपिटल AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C इक्वल्स टू 0 में, so B square minus 4AC must be 0. From here we get required locus, and beauty is this locus itself will be coming like this. Deepak is saying something. What, Deepak? बहुत बढ़िया. Yes, because you have asked this doubt, right, Deepak? And I replied over the number कि यार जब हम equal values चाहिए in this case, but in this case we want equal values but R का value 0 also, right? So that is the difference between here and here. And if you feel these things now, then the real joy will come actually, right? चलिए, बाकी तो इक्वेशन याद रखने में अपने को कुछ दिक्कत है नहीं. सुजान कहां गए तुम? देखिए यहां पर, सो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट.
No panic in remembering this because that is same as equation of tangent plane at the point alpha beta gamma. But make sure कि alpha beta gamma in the tangent plane is here, but plane of contact will be a point of alpha beta gamma which is not on that conchoid. But ultimately the mathematical equations will land up with the same equations. I hope this will be perfectly clear to all. And beauty, you know what is that? The next point which I can discuss is a polar plane. You know why I'm feeling so much joy here? Because over last 15 to 20 days we have done tremendous work over these concept building. And that is why analytical geometry में मुझे फील आता है हमेशा. फील तो मुझे सब में ही आता है. तो अब पोलर प्लेन की बात करेंगे. कौन याद दिलाएगा मुझे पोलर प्लेन के बारे में? याद दिलाइए जल्दी से. जैसे हमने स्फीयर की जब बात की थी. So we had taken a point alpha beta gamma outside of the sphere. Draw a line which was cutting here. This was A, this was P, this was Q, this was the R, and R was the harmonic conjugate of the AP and AQ. याद आया नहीं? 1/R1 plus 1/R2 याद आया कि नहीं? बोलिए जल्दी से. 1/rho equals 1/R1 plus 1/R2 we had written. And after that, what I told you? I told you power of a point. बोलो हाँ या ना? I told you power of a point. Power of a point के बाद I told you polar plane. I told you conjugate points. So what I suggest you, आप ये रफ एक्सरसाइज यू जस्ट राइट हियर इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. बट डिटेल्स के लिए द बुक विच आई हैव गिवन यू, प्लीज रेफर दैट बुक. इन दैट बुकलेट आई हैव अगेन डिटेल्ड ऑल दीज थिंग्स, बट हियर इन द लेक्चर आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ रिपीटिंग द थिंग्स जस्ट बिकॉज कि वो अननेसेसरी, उससे कुछ फायदा होने जाना नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रखा है. बट दिस रफ एक्सरसाइज आई विल सजेस्ट यू सो दैट ऑन गोइंग थ्रू द बुकलेट यू फील द थिंग्स जस्ट 5 to 10 मिनट्स में डन. प्लीज नोट डाउन. किसी को कोई तनाव होगा तो चिल्लाइए. Is that done?
Hers Kambuch. Namaste. One more thing I would like to tell you here is, in the same manner, plane of contact, polar plane, power of point, conjugate points, ठीक है? After that, enveloping cone, ठीक? So all these things we have already done, but again for central conicoid, what does this mean? So that book you will go through. I suggest you please go through that book. Page number also I can tell. This is the page number. 174, 173 onwards, I guess. No, 172. So 171, 172, 173 पेज नंबर, वो उसमें आप जाके करेंगे. बाकी डायमीटर ऑफ अ सेंट्रल कॉनिकॉइड, अगेन वही चीज, लाइक सपोज दैट 2D के अंदर में इफ यू टॉक अबाउट, सो कोड्स व्हिच बाइसेक्टेड हियर, यहाँ पे एक वर्ड एक और यूज है, डायमीटर प्लेन. So not a new thing, just what you call circle के लिए diameter as you feel, the same thing you can feel over the 3D as well. Means circle में you have only one line like this. So if you feel that in 3D, so this locus that will be a plane and that you call as a diameter plane. So that is a locus generated or locus of chords bisected at a point. These are chords bisected at a point. So this article you should also go through that. You will have the crystal clear picture of that. So as first time I have given you this much homework, है ना? वो भी इसलिए दे रहा हूँ because I have done all the things already. चलिए अभी देखेंगे, as we have done the things pretty well, what I suggest you guys is, सुनिए ध्यान से, we have next 2 chapters as one chapter. There I have separately added paraboloid. ध्यान से सुन लेंगे, paraboloid. What happens, please listen, what happens out of paraboloid, like exclusive questions are asked in your exam, so that becomes important for us. That doesn't mean we need to study that separately for long hours, not at all. That is just reflection of all previous articles for central conicoids. ध्यान से सुनिए इस चीज को. Suppose that for example, be on the board please everyone. For example, if we want to find the tangent plane, एक आर्टिकल दूंगा पूरा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ जाएगा. If we want to find the tangent plane at the point alpha beta gamma on the paraboloid, let's say x square plus y square equals to 2z. Fair? ध्यान से देखिए इस चीज को. Till now, what we have done here in the central conicoid, याद दिलाइए सब लोग,
हाउ वी थॉट, शिबुजा इसका अपन ने एक लाइन कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर्ड अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, took the parameter r, from here take a point, ठीक, satisfying ax square plus by square plus cz square equals to 1. So यहां पे किसको सेटिस्फाई करोगे बोलो? p satisfying x square plus y square equals to 2z. So x का वैल्यू इज अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू गामा प्लस एन आर. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है. अपने ने अगर कोई चैप्टर डील कर दिया कॉन्सेप्चुअली तो फिर आप ये यकीन मान के चलिए कि कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं बचा है कि बी इट सीएसई बी इट फॉरेस्ट सर्विसेज यू हैव अ सिंगल डाउट आउट ऑफ दैट. बट इट इज ओनली व्हेन यू रिवाइज, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स विद माय रिदम. अभी देखिए यहां पर झूठ मूठ का तमाशा. यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus by square plus cz square equals to 1 में we had put, so we got the equation of tangent plane as a alpha x plus b beta y plus c gamma z equals to 1. From here we will get some different equation. For example, it may be looking like a alpha x, मैं नहीं कह रहा हूं कैसा दिखेगा, it may be looking like a alpha x plus b beta y plus c z plus gamma equals to 1. Right? We'll get the locus. So if you get the locus like that, तो वो जो इक्वेशन आएगा, remember that. बात क्लियर है? So I am telling you this paraboloid chapter which I have added exclusively in your book, how you can get that easily after attending previous lecture and this one. अब for example, normals का story, the same logic as we discussed here for central conicoids, the same logics can be reflected over that as well. So whatever the different equation you got, that you will be getting for paraboloid now specifically. So what I suggest you when you talk about UPSC, be it CSE or forest services, as far as this paraboloid is concerned, so equation of tangent plane, okay, equation of normal, okay, number of normals का generating cone, after that equation of normal हो गया, फिर plane of contact, फिर polar plane, फिर diameter plane, ठीक है, enveloping cone, ठीक. So these are the things which we had already done for ax square plus by square plus cz square equals to 1. Now it is your duty to revise that for the equation x square plus y square equals to 2z type. And whatever the final equations you get for these things, you have to remember those for question solving. Because the question will be directly asked, to find the equation of tangent plane to this paraboloid at some given point. Let's say, for example, I am saying. So in that case, you need to remember that equation of tangent plane for the paraboloid. But for me as a teacher, what I suggest you, how I worked, I was always fascinating about the conceptual clarity at the first level. So this much conceptual clarity if I have in my mind, अब आप पैराबोलॉइड बोल दो यार, चाहे हाइपरबोलॉइड बोल दो, I have nothing to like worry about that. Clear or not? So what I suggest you, this is a homework for you guys, and I suppose if you are sincerely following this lecture series, then you will definitely do this homework. You will definitely do this homework. I feel so.
करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज से यस और नो, भरोसा दिलाइए, लेकिन इसको लिखें जरूर। प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस डिसुम डिसुम, है ना? दिस डिसुम डिसुम इज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल। लिख दीजिए इसको। ओके शिव, प्लीज राइट दिस एंड फील इट एक्चुअली। तो पता नहीं कि मुझे बार बार बोलने का मन कर रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को जितना आप फील करेंगे ना यहाँ पर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Written, everyone? Have you done that? ओके यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक लोग आप लोग ये भी मुझे बता दीजिए, एवरीवन, किसी को ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये अपने से नहीं हो पाएगा करके? इज देयर एनीवन? क्योंकि इस लेक्चर सीरीज को हमने जिस रिदम पे रखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी को एक भी पॉइंट पर ऐसा लगे कि ये सर ने स्किप कर दिया। मतलब मनरेगा मजदूरी अगर मुझे करनी पड़े तो मैं कर सकता हूं, लेकिन वो लांछन नहीं सह सकता, ठीक है? आप लोग कर लेंगे ना इसको? चलो, so the next chapter which I have added in the booklet, but that is not basically the next chapter.
that is just part of central conicoid. So I have added 3 chapters in that book. Those are 7, 8, 9 I guess. 7, 8, 9. 7, 8, 9 में central conicoids, paraboloid, plane sections of conicoids. ठीक है? So the third segment which I have given you, that is plane section of conicoids. ठीक है? अभी देखिए आराम से बिना किसी तनाव के पैटर्न समझिए. Observe the patterns. When we studied about sphere, right? हमने पढ़ा plane and sphere. क्या करता है? Gives circle. Right or not? So let's say this is the sphere. This is some plane cuts this. So this we got as a circle. Right? The plane cuts the sphere. We get a circle. After that we move for cone and cylinder. ध्यान से देखते रहना यहाँ पर. Then we move for cone and cylinder. What we done in that, especially in the cone, when we talked about cone, if you correctly remember, plane sections we have dealt in detail. क्या कोई मुझे याद दिला सकता है? प्लेन एंड कोन, प्लेन एंड कोन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज था? क्या मुझे कोई याद दिला सकता है? इज देयर एनीवन? व्हेन यू टेक अ प्लेन एंड यू टेक अ कोन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वी गॉट? याद दिलाइए, आगे नहीं बढ़ूंगा अपना, क्योंकि यही सीखने का तरीका है, यही तैयारी करने का तरीका है. इज देयर एनीवन? No one is replying. हाँ? अरे भाई, जनरेटिंग लाइंस. क्या यार, कमाल करते हो भाई. कैसे बोला था आपने यहाँ पर, बताइए? विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी. दीपक, आपको बताया भी था. Without loss of generality, okay, Shubham, let's say we take cone with vertex at origin and plane passing through origin. And strictly I said कि like wherever our syllabus is defined, we are confined to think about cone with vertex at origin and plane passing through origin. बोला था या नहीं बोला था? तो इसके लिए में हमने क्या क्या आपको कंफाइन किया था? कोन, कि वी विल डिस्कस विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम, कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट और नॉट? सो इफ यू हैव टेकन कोन बट तो फिर क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर
plus 2f by z plus 2zx plus 2hx by equals to 0. Homogeneous equation of second degree always represents a cone with vertex at origin. Ux plus by plus wz equals to 0. This is a plane passing through the origin. So if we had considered a line passing through origin, how it will be dealt as? So if you take this as r, so what will have? X equals to LR, Y equals to MR, Z equals to NR. That will satisfy this. So we will have AL square plus BM square plus CN square plus 2F MN by Z. ZX 2Z by Z Z ZX. So NL plus 2H MN equals to 0 and line containing the plane के ऊपर में line, so we will get the condition UL plus, sorry, I guess this line will be looking, you are able to see this or not? कुल मिला के x equals to L, y equals to m, z equals to n we have satisfied here, and we have here as well UL plus BM plus WN equals to 0. One linear equation in LMN, quadratic equation in LMN, chapter of direction cosines and direction ratios. We may get L1 M1 N1, L2 M2 N2 as real. In that case, we will get two generating lines. If we don't get, we may have imaginary. In that case, we may get a conic as well. बोलिए, आप लोग क्यों नहीं बता पाए इस चीज को? अभी अपने आप से पूछिए कि सर ने क्यों डांटा आपको, क्योंकि बार बार मैं आपसे चिल्ला रहा हूं, वी हैव टू गेट द पैटर्न, वी हैव टू गेट द पैटर्न. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री नाउ एंड यू विल फील दिस ज्योमेट्री. ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि you have to do it completely on this moment itself, but slowly if you keep on doing this na, you will feel the joy which I feel actually here. So plane section of conicoids की जब आप बात करेंगे, so here you have the equation as ax square plus by square plus cz square equals to 1, and the plane, suppose that if you take as lx plus my equals to p. So basically here we will be getting the similar conics if I take the plane which is parallel to given plane. So the whole chapter will be taking this type of condition, although we have been defined, you have to discuss this, but without loss of generality we can take a parallel plane to this and we can discuss our things for this structure as we discussed for this and this. Did you get my point? So whatever the interpretations we may have here, some other interpretations we may get here, plane sections of conicoids. And in that case, what are those interpretations which you need to do? For that I am giving you some directions now. पहले तो आप इसको लिख लीजिए एज अ हिंट. ऑब्जर्व द पैटर्न्स टू फॉलो दिस चैप्टर. लिखिए प्लीज, प्लीज प्लीज इसको लिखे. एंड दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज एक्चुअली. लिखिए सारे लोग.
Is that done? Everyone, have you done this? Shall I proceed now? Please reply. Shall I proceed? Okay. Be on the board, please, everyone. अभी देखिए ध्यान से. Everyone, see, if you are taking a plane like this, if you are considering the central conicoid here, for example, if you take paraboloid, for example, if you take hyperboloid, for example, you take ellipsoid, here you take some plane, for example, you take a plane x equals to 0. ध्यान से देखना कितना आसान सा चैप्टर है. For example, you have taken an ellipsoid like this, है ना? You have taken a plane x equals to 0. So what is the plane section? Is, if you take x equals to 0, y square upon 3 plus z square upon 5 equals to 1. So what is this? This is an ellipse. Ultimately, when you say the plane sections of conicoids, you will get conics in 2D. Say yes or no. If you get conics here, means you may get ellipse, you may get circle, you may get parabola, you may get hyperbola. When I was demonstrating yesterday all the central conicoids, there also I have done this exercise for you. But this is some for like spatial planes. What happens if I take some general plane? Then what will happen? So the full theme of this chapter is considering the general equations. Okay? So let's say if you are taking here hyperboloid of two seats, here you take a general plane like Lx plus My plus Nz equals to 0.
you will intersect that, you will get a conic section in 3D. Now they are interested in some interpretations about this cone. Interpretations about these conics. So the whole chapter is confined to this story. There are 7 different articles. For example, the conic section you got, you are interested in finding the axis of that. You are interested in finding the central axis of that. Suppose that that has 3 axes. You are interested in finding some area of the cross section. You may be interested, right? So I have added 7 articles in this particular segment, plane sections of conicoids. So if you observe that book which I have given you, पेज नंबर 202 के ऊपर all those 7 articles are given. Now what I suggest you, if you are seriously like attending these lectures, then don't forget to do this exercise, and when you will start attending this chapter, please watch these last 5 minutes again. टाइम नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, इस लेक्चर 15 में किस टाइम पे सर ने ये बोला था, प्लेन सेक्शंस ऑफ कॉनिकॉइड्स. यहाँ पे टाइम नोट कर लीजिए. मेरे वॉच में तो 10:25 हो रहा है पीएम करके, 9 बजे स्टार्ट किया था. सो 125 के अराउंड होगा वीडियो लेंथ पे. So whenever you will be attending this chapter from that book, please listen my these words what I said here. You will have no issue in that chapter. So आज मैंने आपको होमवर्क जो दिया है वो दिया है पैराबोलॉइड वाला चैप्टर, ठीक है, प्लेन सेक्शंस दिया है. इसके पहले द सेकेंड हाफ वो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑल, राइट, ऑलमोस्ट तो मैंने कर ही दिया था. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू पीपल आर सजेस्टेड टू गो थ्रू दिस होमवर्क प्लीज रिलीजियसली. आपको मजा मतलब ऐसे मजाक में लेना है तो आप कर सकते हैं, बट आई नो यू ऑल आर वेरी सिंसियर, सो यू विल डेफिनेटली गो फॉर दैट. ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लेंगे, यू विल फील कि सेंट्रल कॉनिकॉइड्स में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी. ठीक है, चलिए अब सुनिए जरा आगे का प्लान. अभी कहीं जाइए नहीं, प्लीज बी हियर एंड आई वांट टू डिस्कस समथिंग. अपने पास बचे हैं 2 चैप्टर्स. वी हैव 2 चैप्टर्स रिमेनिंग. एक है जनरेटिंग लाइंस, दिस नीड 1 लेक्चर ओनली. अगला है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इनटू होमोजेनियस फॉर्म. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर. दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर. सो वी नीड 2 लेक्चर्स फॉर दिस. सो व्हाट आई फील, मतलब एज अ स्टूडेंट, कि टुमारो मतलब कल क्या है, फ्राइडे. सो लेट्स से फ्राइडे को वी डू द जनरेटिंग लाइन, सैटरडे को वी डू द रिडक्शन. ठीक है, संडे लेट्स हैव ऑफ. संडे को कुछ काम आप कल कर लीजिए एंड रेस्ट ऑफ द जॉब यू डू इट ऑन संडे. फेयर. सो एट द लास्ट, लेट्स से ऑन मंडे probably, I will again come on this chapter, whatever doubts you people will have, क्योंकि 3-4 दिन में कई सारी चीजें दिमाग में छपने लगेंगी फिर. तो ये मैं एज ए स्टूडेंट आपको काम दे रहा हूं, एज ए टीचर नहीं. संडे के बाद में मंडे को वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर अगेन दिस होमवर्क डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. वैसे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर भी अगर आपको इसके प्रॉब्लम्स में कुछ दिक्कत आता है तो वी कैन हैव लाइक दैट. सो मेरा प्लान ये है, अभी आप बता दीजिए कल ही सेंट्रल कॉनिकॉइड किया जाए या सेंट्रल कॉनिकॉइड का जो भी आपका डाउट वगैरह 3-4 दिन में इकट्ठा होगा उसको मंडे को कर सकते हैं. कल और परसों में इसको फिनिश कर देते हैं ताकि एक मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होगा करके और इसका अच्छा खासा काम भी हो जाएगा. नहीं तो कल जल्दी जल्दी करेंगे तो आप रिवाइज भी नहीं करेंगे. मैं चाह रहा हूं एक एक वर्ड को आप रिवाइज करें बुक से, क्योंकि बुक पे भी बहुत मेहनत की गई है दोस्त, मजाक में नहीं लेना उसको. चलिए
Please put your views, everyone. Please put your views regarding this plan. जल्दी रिप्लाई किया करो यार, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। एक तो इसमें वीडियो में लैग रहता है, वो सामने से जो दिख रहा है वो लैग है उसमें, मैं खड़ा रहता हूँ तब तक। आप चाहें तो ये डिशुम डिशुम लिख लीजिए। यस, ओके दीपक, फेयर। आलिया, ओके, फेयर। फेयर मतलब आपकी तरह आई थॉट लाइक दिस कि ऐसे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फेयर। सो दिस इज द पैटर्न। टुमारो, कल आप लोग तो अपने होमवर्क को कंटिन्यू रखिए। टुमारो वी विल हैव द लेक्चर फॉर जनरेटिंग लाइंस। ओके डियर फेलोज, सो इट्स एनफ फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा कुछ कुछ नया ऐसा था कि मैं उतना कंफर्टेबल शायद आज ना रहा हूँ, कुछ भी ग्लिच आया होगा तो आई एम सॉरी। शायद कुछ लाइन नीचे चली गई होगी उधर उधर, पता नहीं, वो एक दो दिन में आदत पड़ जाएगी, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, विल मीट बाय टुमारो। कल हम वापस से 7 PM वाला लेक्चर ही अपना रखेंगे, ठीक है। ओके डियर्स, बाय, गुड नाइट। Good night everyone, good night.